ले लिया इसका पूरी प्रोसेस का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? अच्छा, मैं अभी वीडियो दिखाती हूँ, इस वीडियो को देख लें बच्चे। Clot formation helps to conserve the body's supply of blood. In this illustration, the blood vessel contains red blood cells, white blood cells, platelets, and tiny proteins called clotting factors. These components of the blood float together in a straw-colored liquid called plasma. When the vessel wall is torn open by an injury, blood begins to escape. In response to this damage, the vessel quickly constricts, reducing the flow of blood. This constriction lasts only for a few minutes as the body puts in place a plug to stop the bleeding. Platelets soon recognize the injury and begin to stick to the damaged surfaces. This is called platelet adhesion. The adhering platelets change shape and release chemicals which keep the vessel constricted and draw more platelets into the damaged area. These platelets are said to be activated. Additional platelets arrive and begin to stick to one another so that a loose plug is formed. This is called platelet aggregation. When tissue is torn apart during an injury, blood is exposed to a chemical called tissue factor, which naturally resides on the surface of tissue cells, or may also be displayed on the inner lining of the blood vessel wall. This tissue factor sets into motion the chemical reactions of the clotting factors found floating in the nearby blood. Around a dozen different chemicals called clotting factors circulate inactively within the blood. When called upon, these clotting factors participate in a complex sequence. अभी देखिए ये आप लोग को नजर आ रही है डिफरेंट कलर की स्टार शेप। अब ये स्टार शेप क्या बना रहे हैं बच्चे? क्लॉटिंग फैक्टर्स है, फाइब्रिन प्रोटीन है। तो ये देखिए सारे प्लेटलेट्स को ये आपको शो कर रहा होगा, ये देखिए फाइब्रिन तार बना लिए इसको। अब इस काम, ये देखिए ये फाइब्रिन प्रोटीन है बच्चे। जब ये फाइब्रिन प्रोटीन क्लॉट बना लेता है तो ये कंप्लीटली ये क्लॉट रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक और केस होता है कि फाइब्रिन प्रोटीन सबसे ज्यादा बन जाते हैं। जब फाइब्रिन प्रोटीन ज्यादा बनते हैं तो ये देखिए रिजल्ट में ये क्या बनेगा, ये क्लॉट जो है वो ज्यादा होता जाता है, ठीक है। अब ये क्लॉट बन गया, यहाँ पर खून मुकम्मल जम गया, लेकिन फाइब्रिन प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं कोगुलेशन, मतलब हो गया स्टॉप। ये क्लॉट फिर बड़ा होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स चिपक रहे हैं, तो चिपकने के बाद ये क्लॉट बड़ा हो गया। अब ये क्लॉट बड़ा हो गया तो ये देखिए खून को या ब्लड सप्लाई को स्टॉप करता है। साथ में दिखा भी रहे हैं कुछ। Produced chemicals help to limit the size of the clot. The first group blocks coagulation. These substances are known as coagulation inhibitors or natural anticoagulants. When these chemicals interfere with the reactions among the clotting factors, fibrin formation is blocked, and no new fibrin strands are available to hold additional cells to the clot. In this way, clot growth is kept to a minimum. The other group of chemicals keeps clot growth under control by cutting the fibrin strands and actually dissolving part of the clot. These chemicals are part of the natural process known as fibrinolysis. Fibrinolysis occurs as chemicals called plasminogen activators are slowly released from the inner lining of the damaged vessel wall. These plasminogen activators trigger the destruction of the fibrin strands that hold the clot together. So coagulation inhibitors can only stop the growth of the clot, but fibrinolysis can actually dissolve part or all of the clot. In fact, when the vessel is completely healed, the remaining clot is dissolved by means of this second group of chemicals. To sum up then, rapid clot formation is essential for conservation of the body's supply of blood. अच्छा, ये उसकी समरी है, इसकी समरी देख ले बच्चे, फिर ये मीटिंग और हो जाएगी। शाबाश। We've seen the constriction of an injured blood. पहले हमारे पास कट लगता है तो ब्लड वेसल्स तंग हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है।
फिर प्लेटलेट जमा हो जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन, फिर फाइब्रिन मैश बना लेता है, वो मैंने आपको बता दिया था कि फाइब्रिनो मैश का क्या काम है। फिर कोगुलेशन इनहिबिटर स्टॉप करते हैं किसको, एक्स्ट्रा क्लॉट को, और फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, एक्स्ट्रा क्लॉट को रिमूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और वीडियो भी है, वो मैं दिखाती हूँ बच्चे। Clots to stop the bleeding. Clotting is a complex process, and there are four main things that make it possible: platelets or cell fragments, clotting factors, which are special proteins, fibrin, which is a protein mesh made up of a special kind of clotting factor, and finally, other cells, like red and white blood cells. Because clot formation is so important, platelets and clotting factors are always available, floating around in your blood. Now, let's talk about the 4 steps involved with forming a blood clot. When there is a tear in a blood vessel, the first thing that happens is that the nearby platelets are activated and become sticky. They start sticking to each other and to the sides of the hole in the blood vessel. For small holes, enough platelets usually stick together to form a temporary plug. But a platelet plug isn't strong enough to block the opening for long, so it must be reinforced with other materials. Otherwise, the blood flowing past the hole could wash the plug away. These other materials are called clotting factors. As the clotting factors float by the tear, they become activated or turned on and add themselves to the platelet plug. A special kind of clotting factor can weave itself together with others of the same kind and form a web of fibrous tissue called fibrin. This web acts like glue and holds the platelets and the other clot. समझ आ गई है? हाँ, आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गई बच्चे, मैं 2 मरतबा वीडियो दिखा चुकी हूँ। चलिए, गुड। सो दैट इज द एंड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग। ये टॉपिक हमारा हो गया। इंशाल्लाह कल हम लोग बच्चे पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए, जिनका समझ आ गई है वो जा सकते हैं क्लास से बच्चे। दे आर अलाउड लीव द मीटिंग। लेस देन 1 मिनट है तो बस मीटिंग में से भी लीव हो